फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ नैनो सेकेंड इज़ नैनो हमारे पास प्रीफिक्स होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻⁹ होती है. इन दिस केस ऑप्शन डी 10⁻⁹ seconds is our answer. Next is the dimension of energy density same as that of it is option A pressure. अगर हमने डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली उनका यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे. एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला एनर्जी ओवर वॉल्यूम होता है. जब हम उनके यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा. इसी तरह प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. यूनिट सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगी. ऑप्शन ए प्रेशर इज़ आवर राइट आंसर. Next question is the quantities L by R and RC where L, C and R stands for inductance, capacitance and resistance respectively have the same dimensions as those of जो L over R है उसकी यूनिट हमारे पास हेनरी ओवर ओम आ जाएगा. फर्दर यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो रिटन है वो आ जाएंगे. कैंसलेशन के बाद हमारे पास फाइनली सेकेंड्स आ जाएगा. सो L by R का हमारे पास यूनिट सेकेंड आएगा. जो RC है दैट इज़ टाइम कॉन्स्टेंट और इसका भी यूनिट सेकेंड्स होगा. तो इन दोनों के यूनिट्स हम किससे रिलेट करेंगे? ऑप्शन से, ऑप्शन सी टाइम से. और अगर यूनिट सेम है तो इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे. नेक्स्ट इज विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री पेयर्स. जो ए, बी और डी ऑप्शन है हमारे पास उनके यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएंगे. जो ऑप्शन सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जब हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा. जब मोमेंट ऑफ फोर्स कम करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दीज आर नॉट सेम and according to this option C moment of inertia and moment of force is going to be our right answer. Next is in scientific notation numbers are expressed in. It's a general question. इसका आंसर है option A power of 10. Next question is 1024 can be written in scientific notation as scientific notation में decimal होना ज़रूरी है. अगर हम फर्स्ट डिजिट के बाद decimal लगाएंगे उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 3 आएगी. पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि जब हम decimal के राइट साइड पे जाएंगे तो उसमें पावर हमेशा पॉजिटिव आती है. जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो उसमें पावर हमेशा नेगेटिव आती है. सो इन दिस केस ऑप्शन ए 1.024 into 10⁻³ is going to be our right answer. Next is the dimensions of Planck's constant are the same as those of. Planck's constant का जब यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? Planck's constant is equals to एनर्जी और फ्रिक्वेंसी that will be किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसका यूनिट किसके सेम आएगा? और फर्स्ट 4 ऑप्शंस में से तो वो होगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब हम एंगुलर मोमेंटम का यूनिट फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय इनर्शिया तो वो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दोनों का सेम है तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे. सो ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next question is the density of a cube is measured by measuring its mass and the length of its side. If the maximum errors in the measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density is it is 9%. How? हमारे पास density का formula है that is m over v. जब हम यूनिट्स लिखेंगे इनके तो m over l क्यूब आ जाएगा. परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर होगा वो हमारे पास फर्स्ट परसेंटेज के साथ ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन लेंथ. और जब हम इनकी वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास 9% आ जाएगा. सो ऑप्शन डी 9% इज़ आवर राइट आंसर. Next question is the uncertainty in a measurement may occur due to. This is a learning question. इसके 3 reasons होते हैं कि uncertainty in a measurement क्यों occur होता है? Because of the limitation of an instrument that is option A, natural variation that is option B, and inadequate technique that is option C. So option D all given in A, B and C is going to be our right answer. Next is which of the following quantities has not been expressed in the proper units? तो option D energy is equals to kilogram per meter second. This is not correct because energy का जो हमारे पास unit होता है that is kilogram meter square per second square. Next is 1 nanometer is equals to 1 nanometer हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁹ के. लेकिन हमने सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है तो 10⁻⁻⁹ को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आएगा 10⁻⁷. ये सेकेंड ऑप्शन भी गिवन है उसके मुताबिक भी हमारे पास 10⁻⁷ ऑप्शन ही आता है. सो ऑप्शन सी 10⁻⁷ सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next question is a digit 0 in a measurement. Option इसका right answer है may or may not be significant. Significant figures में 0 कब significant होता है? जब वो non-zero numbers के दरमियान में sandwich हुआ हो, दरमियान में आया हो.
और जब वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट साइड पे हो तब ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है, लेकिन जब वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ़्ट साइड पे हो तो वो नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता. तो ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173 आर. जब हमारे पास ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे आएंगे, सो इन दैट केस द ज़ीरो वोंट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट. सो इन दिस केस ऑप्शन ए 3 इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next question is, smaller the least count of the instrument, more is the measurement. The answer is option B, precise. जितना हमारे पास least count smaller होगा उतनी measurement हमारे पास precise होगी. Next is the number of significant figures in 15.0 is or are. तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, वो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे आया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल हमारे पास ज़ीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगा. सो आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 इन दिस केस. ऑप्शन डी 3 इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next question is, the equation of plane progressive wave is given by y is equals to a sine omega t minus kx. The dimensions of omega over k are that of. तो जो हमारे पास ब्रैकेट में गिवन है ओमेगा टी और के एक्स, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे और ओमेगा ओवर के कांस्टेंट का हमने डायमेंशंस निकालने हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स ओवर टी कैलकुलेशंस करने के बाद. तो एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम टी है, और ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के. सो ऑप्शन बी वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डायमेंशनल एनालिसिस इज़ हेल्पफुल फॉर. ये लर्निंग क्वेश्चन है हमारा और इसका आंसर है ऑप्शन डी. ओनली ए एंड बी आर करेक्ट. A is deriving a possible formula and B is checking the homogeneity of a physical equation. Homogeneity किसी कहते हैं जब हमने किसी दो equation के दरमियान similarities निकालनी होती हैं. Next question is, which equation is not dimensionally correct? Option C हमारा right answer, that is S is equals to VT square, क्योंकि जब हम S के unit find out करेंगे that is meter, जब हम VT square के unit find out करेंगे that is meter second. यूनिट सेम नहीं है तो डायमेंशंस भी सेम नहीं होंगे. सो ऑप्शन सी S is equals to VT square is our right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़. विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल्स टू RV होता है, और जब हम इसके यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे तो कैंसलेशन होकर हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू दिस इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next is, 3 students measured length of a needle with meter rod and recorded as 3 values are given. Which one is the correct record? So इसमें हमारे पास जो मीटर रॉड है उसके हमारे पास लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होती है, उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सी 0.214 मीटर ओनली राइट आंसर आएगा. Next question is, a force F is applied on a square plate of side L. If the percentage error in the determination of L is 2% and that in F is 4%, maximum error in pressure is. फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया इज इक्वल्स टू एफ ओवर एल स्क्वायर. परसेंटेज एरर इन पी हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे परसेंटेज एरर इन एफ प्लस 2. डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन एल. जब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ऑप्शन डी 8% आएगा. Next question is, the energy of a photon of light of frequency f is given by hf, where h is the Planck constant. What are the base units of h? हमने Planck's constant के unit find out करने हैं, तो वो हमारे पास क्या निकलेंगे, हमने MCQ नंबर 7 में भी किए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ. तो ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टी रेडियन इज़ द SI यूनिट ऑफ. जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं वो फर्दर दो तरह के होते हैं, दैट इज टी रेडियंस एंड रेडियंस. रेडियंस का SI यूनिट हमारे पास प्लेन एंगल होता है और टी रेडियंस का सॉलिड एंगल होता है. सो इन दिस केस ऑप्शन बी सॉलिड एंगल फॉर टी रेडियन इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पेयर हैज सेम डायमेंशंस. जब हम इन सारों के यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी, एनर्जी एंड टॉर्क, इन सारों के हमारे पास सेम यूनिट्स आएंगे, दैट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगे. सो इन दिस केस ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next is, total uncertainty in result obtained from the subtraction of two measurement is equals to. जब भी हमारे पास two measurement subtract या add होंगी तो उनकी जो absolute uncertainties है वो हमेशा add होंगी. तो ऑप्शन A, that is sum of their absolute uncertainties is going to be our right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल. जो हमारे पास गीगा है वो 10⁻9 होता है, जो हमारे पास मेगा है दैट इज़ 10⁻6, जो हमारे पास पेटा होता है वो 10⁻15 के इक्वल होता है, और डेका हमारे पास 10⁻1 के इक्वल होता है. सारे प्रीफिक्सेस है और इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है,
beta की, so option B beta is going to be our right answer. Next question is 1 femto stands for, femto is also a prefix and its value is always equals to 10 raised to power minus 15, so in this case option A is going to be our right answer. Next is percentage uncertainty in radius r is 2%. The percentage uncertainty in volume of sphere is, volume of sphere के हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 pi r cube. परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम परसेंटेज एरर इन r को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट 3 है, तो जब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, सो ऑप्शन बी 6% इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next is the unit of force is dash and its symbol is dash. Which is the correct pair? तो हमने उसका यूनिट बताना है और सिंबल बताना है. मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम साइंटिस्ट का नाम उसके फुल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता. जैसे अगर आपने न्यूटन पूरा लिखना है स्पेलिंग्स तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, जैसे कि ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है. जबकि अगर आपने सिर्फ सिंबल लिखना है तो वो हमेशा कैपिटल होगा. सो इन दिस केस ऑप्शन डी इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम द अदर थ्री. तो जब हम ऑप्शन ए, बी और सी के यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब हम ऑप्शन डी के फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी, उसके यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा. सो ऑप्शन डी इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटी इन एस आई यूनिट्स. ऑप्शन ए, सी और डी जो हमारे पास हैं दैट आर एक्चुअली द बेस क्वांटिटीज़, और जो ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चार्ज है that is a derived quantity, so option B is going to be our right answer. Next question is which one is the correct representation of the unit of pressure. Option B, Newton per meter square is our right answer. Next is in an experiment to determine the acceleration of free fall g, the period of oscillation d and length L of a simple pendulum were measured. The uncertainty in the measurement of L was estimated to be 4% and that of T 1%. The value of G was determined using the formula this. What is the uncertainty in the calculated value for G? हमने percentage uncertainty percentage error in G find out करना है. That will be percentage error in L प्लस 2. चूँकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में पावर 2 है तो इसलिए हम 2 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन टी. तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है वहाँ से पुट करेंगे, आंसर हमारे पास 6 आएगा. सो ऑप्शन बी 6% इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next question is which experimental technique reduces the systematic error of the quantity being investigated. हमने बताना है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जो सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकता है. तो जब हम किसी करंट को मेजर करेंगे उसके एम मीटर को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उसमें से जो ज़ीरो एरर है वो रिमूव हो जाए. सो ऑप्शन ए, एडजस्टिंग एन एम मीटर टू रिमूव इट ज़ीरो एरर बिफोर मेजरिंग अ करंट इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजरमेंट. हमने पढ़ा था कि जब दो मेजरमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं. इन दिस केस जब हमारे पास दो मेजरमेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं. तो इन दिस केस ऑप्शन ए, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.400 आर. जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट साइड पे आ रहे हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी 4 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स एज फोर्स. फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है. जब हम ऑप्शन डी एनर्जी ओवर डिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे तो वो भी सेम आएंगे. देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. Next question is the number of significant figures in the length of a bar 9800 millimeter measured by meter rod r. तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं, अगर हम फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं तो नॉन डिजिट्स के बाद जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो राइट साइड पे आ रहे हैं, इसलिए एवरी डिजिट इज़ टू बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट. देयरफॉर इस मेजरमेंट में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. Next question is a radio aerial of length L when the current is I emits a signal of wavelength lambda and power P. These quantities are related by equation given in my pass where K is a constant. What unit if any should be used for the constant K? K के हमने units find out करने, ऊपर वाले equation से K को separate कर लेंगे तो हमारे पास आएगा P lambda square over I square L square. इनके units हम डालेंगे और cancellation करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी ओहम.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी ओवर आई होता है, इसका यूनिट पुट करेंगे तो कैंसलेशन वगैरह करके हमारे पास जो यूनिट्स आएंगे जैसे कि मैंने किए हुए हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब ओवर ए स्क्वायर। डायमेंशंस हमने इसके फाइंड आउट करना है। किलोग्राम का कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है, मीटर का कैपिटल एल से होता है, सेकेंड्स का कैपिटल डी से होता है और एम्फीयर का सेम कैपिटल ए रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए m1l² t-3 a-2 आंसर आएगा। Next question is the equation of state of a real gas can be expressed as this, where P is pressure, V is the volume, T is the absolute temperature and A, B, C are the constants. What are dimensions of A? A के हमने dimensions find out करने हैं। तो first bracket को हम लेंगे that is P plus A over V square। A over V square को हम P के equal रखेंगे तो cross multiply कर लेंगे, A is equals to PV square बन जाएगा। Similarly pressure और volume के हम units को लिखेंगे, फिर cancellation करने के बाद हमारे पास जो perfect unit बनेगा that will be kilogram मीटर की पावर 5 और पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी तरह हम इसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। Next question is the error in measurement may occur due to, this is a learning question and the reasons for the error in measurement is inexperience of a person option A, the faulty apparatus option B, inappropriate method option C. So the perfect answer is going to be option D, which is all of the above due to all reasons in A, B and C. Next question is total number of base units in international system of units are, तो base units हमारे पास SI में 7 होते हैं। अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ कि वो कौन कौन से होते हैं, so number 1 is length whose unit is meter, number 2 is mass whose unit is kilogram, number 3 is time whose unit is seconds, number 4 is current whose unit is ampere, number 5 is temperature whose unit is Kelvin, number 6 is amount of substance whose unit is mole, and number 7 is light intensity जिसका unit candela है। So option A is going to be our right answer. Next question is random errors can be reduced by, reduce कैसे किए जा सकते हैं, जब हम measurements लेंगे और इन सारे measurements का हम mean निकाल लेंगे। So option C, taking mean of several measurements is going to be our right answer. Next question is time period T of a simple pendulum may depend on M, the mass of the bob, L, the length of the string, and G, the acceleration due to gravity, that is T is directly proportional to MA, LB, G, C. What are the values of A, B and C? तो जैसे कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ T इज इक्वल्स टू 2/√L over G, T will be directly proportional to M par 0 बिकॉज हमारे पास मास नहीं गिवन इस फार्मूला में। हमारे पास जो लेंथ है दैट इज़ 1/2 जो रूट की पावर है, और G जो है जो हमारे पास ग्रेविटी है, चूँकि वो डिनोमिनेटर में है इसलिए उसका जो रूट का पावर है वो नेगेटिव में लिया जाएगा। तो इसी तरह ऑप्शन ए की पावर 0, बी की पावर 1/2 और सी की पावर -1/2 इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next question is the velocity of a particle is given by v is equals to at squared plus pt plus c. If v is measured in meter per second and t is measured in seconds, the unit of option C is our right answer, that is C is meter per second, because as v is in meter per second, all other quantities which are being added must have the same units. So C is in meter per second is going to be our right answer. Next question is the least count of a stopwatch is 0.1 seconds. The time of 20 oscillations of the pendulum is found to be 20 seconds. The percentage error in the time period is, percentage error in time period कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा least count over time taken into 100. least count हमारे पास given है that is 0.1 seconds for stopwatch, और जो time taken है that is 20 seconds for 20 oscillations multiplied by 100। जब हम इसको calculate करेंगे तो हमारे पास final answer आएगा option B 0.5%. Next question is physics is an experimental science and the scientific method emphasizes on, this is a learning question again and its answer is going to be option A, accurate measurements. Next question is what is the answer of milli into kilo over deca? तो milli जो हमारे पास होता है 10 raised to power -3 होता है, multiply by जो kilo होता है that is 10 raised to power 3 over deca हमारे पास 10 raised to power 1 होता है। जब हम multiply करेंगे और divide करेंगे इस सारे को तो हमारे पास आंसर 10 raised to power -1 आएगा। ऑप्शन C is going to be our right answer. Next question is the radius of a ball is this centimeter. The percentage error in the volume of the ball is, first of all we have to find the percentage error in radius, that will be least count over time taken multiply by 100. least count हमारे पास 0.2 है, time taken 5.2 है, multiply by 100 जब इसको करेंगे तो हमारे पास 3.8% आएगा। अब हमने स्टेटमेंट के मुताबिक परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चूँकि बॉल का गिवन है तो बॉल के लिए फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा दैट इज़ फॉर स्फेयर, देयर बोथ आर द सेम 4/3 pi r cube।
जो हमारे पास परसेंटेज एरर इन रेडियस है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कांस्टेंट 3 है, और हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आएगा 11%. ऑप्शन इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर.